Everyone, welcome back to your channel Thakur's in Europe. My name is Dheeraj, and this is part 2 of income tax return PIT, or also called PIT 37 income tax return, because as you all know that we have already covered most of the topics related to income tax return part 1 in my video last year. Thank you so much for overwhelming response on the video, as this was the first video which could cross 7,000 views, and I thought it is self-sufficient and good enough for this year as well. But since morning today, when the window opened, I got around 100 messages with a lot of questions, a lot of queries, and I felt that there is definitely something may have changed which has caused so many questions. And I collected all the questions from the group, and I came up with this part 2 video of income tax. So part 1 is still valid because most of the things are same, but this particular part 2 I am going to only cover the topic which are changed or which are little tricky, and also the problems that most of the viewers are facing. So I have covered in this part 2 of the video. But before I start, as I always say, this video should reach to the maximum viewers so that it can help save them a lot of money and get a very good return, because today I submitted my PIT 37 form, and I downloaded a UPO for the public transportation pass. And as I promised in first part that I will share the video on how to make a monthly pass, so I think now we have the video already, public transportation system in Poland, which you may be seeing in the link in the description. So please share this with all the friends so that they get to know about public transport as well. Now let's start the video. And as I always say, do not trust me, trust the links which I have shared in the description of the video, because they are from the government. And I'm sure this will not raise any doubt in your mind about whatever information I'm providing, because I'm not providing any information from my side. It is from the government. But all I'm trying to do is help you understand the process in the simple, organized way. So I hope you will like the video. So let's start the video now. Poland income tax return 2023 to 24, Poland income tax part 2 of the video. So window has opened already 15th February 2024, and I think last date is 30th of April 2024. I think you can verify from the Podatki website. Video only covers the latest changes and questions asked by the group members. Please refer to part 1 for more details about taxation system in Poland for or the first timers. And all information shared, as I discussed, is from EPIT or Podatki.gov.pl. So let's help and support each other to make the world more beautiful and spread the knowledge. Now, before I start, I'm not going to describe about the various tax slab because it is already covered in part 1 of the video, and you can refer to that. Also, you can check from Podatki website. It is clearly given that up to 30,000 no tax, up to 1,20,000 there are 12%. Income for more than 1,20,000 means exceeding the income more than 1,20,000, it's 32%. And if you're filing joint declaration, then in that case 2,40,000 up to 2,40,000 is 12%. So this is very common. And youth relief, which are, I mean, youth which is below the 26 years of age, it is 85,000 something, which you can verify from the government portal. Here I'm going to only briefly tell you what is PIT 11, because many of the people are not aware about my first video. So PIT 11 is similar to Form 16 in India, which you get from the employer at the end of the year when the tax is deducted. And then PIT 36 is for income tax outside India, so outside Poland. So if you have any income outside Poland, you need to file PIT 36 form and declare all your income outside Poland. And then PIT 37 or PIT 37 is the form that is applicable for us, which we are going to discuss in this video, which is for tax residents of individual taxpayer in Poland. You can file as a single earner or as a single parent or also as a joint declaration with your spouse. So but as I always say, refer to my first video for more details. Here we are just going to focus on the part or the problems that everybody was facing while filing the income tax return this year. And since morning I got 100 messages, so I thought this is the best way to answer all the questions. Now here, so when you open the website podatki.gov.pl, you can check description, and always check description for latest updated information on all my videos. Now here, when you click on this, you get a link like this, e-tax office login, and then you see these two kind of windows. This is the new change, because last year I was seeing only this information. Now we have this as well. So I tried to click on this because I had the last year history. So I clicked on this, then it asked me the revenue from last year,
and then I find little complicated. It's not that complicated as well. If you have the data from last year and also pit 11 handy, then you can select this second option. However, if you don't want to take the pain of looking at the PIT 11 form, it's better to select this login.gov.pl and then click on select. And when you select this, you should see a window like this. So here you will have your name, and then you will have all these information. So, but if you are doing it for the first time, like last year, I was a first timer, and many like me who were connected in my community, they were the first timer. So then you have to first click on here on the left hand side corner. You will see a macro tax account number you have to generate. Please refer to my first video for that. And then second is Zap 3 form, where you will be filling all the details, which I'm going to discuss in some time, but it will have information. You can update your bank account details. So before you start filing your first income tax return here in Poland, make sure you have macro tax account number generated and ZAP 3 form filled already. And then after, once you are done with all these things, you can click on your EPIT. So when you click on this, by default, you should have all the information already provided by the employer to the income tax office. So you don't have to do anything. It's very straightforward and it will happen automatically. However, for the second timers like me this year, I'm second time for this, so I am getting a prompt like this: your EPIT use the PIT settlement, and I can click on file now. And when I click on file now, like file PIT, so you can either click file PIT or you can either click your EPIT, and then after it should download all the information. So as I just said, make sure you have macro tax account number ZAP3 already filled before you do this. And when you have done this and when you click on file PIT, you will see a window like this, which will have all the details. Point to be noted is, uh, I've already said that if you're a first timer, then you need to fill all those things that we have covered. And you can submit this income tax return in two parts, in fact three parts: individually, together with spouse, or as a single parent. And what is important is, so here you have information like your income, your reliefs if you have applied any. If you have not, then you can click on edit and you can fill in details. And then here you will have your details, your address, your bank account, your tax office, all those things. And many of the people, even previous year I had a debate, and even now they are confused about child relief. So let me make it very simple for you. Of course, as per the instructions, you see it says that 1,20,000 above, if you have income, you can't claim child relief. My understanding still is, if you are filing joint tax declaration, then in that case this 1,20,000 plus 1,20,000 becomes 2,40,000. And if your income is above 2,40,000, of course you will not be eligible to claim child relief. But if it is below that, you should be able to. And definitely there are certain disconnects, so some people do not agree with me, but it's perfectly okay. Let me tell you the simple way. Even if you fill here the child tax relief, okay, and if your income is beyond the threshold, you will not be getting child tax relief, because it will not make any changes to your final income tax statement. So that means even if you're claiming this, it won't have any impact. If your income is below the threshold, you will get the relief. If your income is not is above the threshold, you will not get the child tax relief, even if you fill this information here. And automatically income tax have the information about your family details. Like last year, I remember I filled for my son, but this year I have a daughter which was 3 months old, born in November. So I could see that by default here, by income tax, when I clicked on this, they had the details and they already gave me 92 zloty of child tax relief for the second child, and only for 2 months, because the child was 2 months old. So I hope this clears your doubt. So even if you have confusion, don't worry. Nothing is going to occur. Nobody is going to claim or blame you. You can simply fill in, and if you see there is a difference, it's okay. If you see there is no difference, you can leave it like that. I hope this clears the doubt now. And many of the people ask me, what is the tax office? What is the tax office we should select here? So your PIT 11 should have information about your tax office. If you don't have, you can select the default tax office. For example, for me, tax office Krakow, and there are multiple offices. But your PIT 11 form, on the top of it, you have the tax office information. So I hope this will not raise any doubt anymore. And let's say, and again, I leave it to you. It's totally your call. Okay, every information is provided on the Podatki portal. If you're satisfied with this information, by default simply click on accept and send, and that's all. Your income tax return for this year is done.
But if you are not satisfied with the return, because here in the on this side you can see my income actually is showing in red. Red means I need to pay this much amount to income tax offices. So that means now I will try for together with spouse, and I will see what benefit do I get. So it's your choice. You can click accept and send here. If you are not satisfied with this, then you can select, if you have a spouse or children, you can submit any of these options. Now, when I select together with spouse, I am asked spouse parcel number. Spouse date of birth automatically comes here when I added parcel number. And then revenue from 2022, as my wife is not housewife or she's not working, so I will put zero. And here also I will put zero. But if your spouse is working, if she is a working professional, then you need to enter details. For example, last year she was not working, it could be zero. This year, if she had some income, let's say 4,000, 5,000, 8,000 zloty, you can fill it. Okay. You have the choice to file, let's say if husband and wife both are working together, both the partners are working, and you both can file individual ITR as well as you can file joint ITR. It's totally your call. You decide, because sometime, let's say spouse have lower income, and then in that case joint declaration definitely help you save money. But sometime when spouse also have good income and husband also have good income, and combined together, it doesn't give us the very good benefit. So in that case, spouses, they file individual tax return. So it's totally your call how you want to take it. Okay, but this is how you can do it. So I hope, and it is really worth to try to compare both the scenarios, single taxation as well as joint taxation, and see what kind of benefit you get, and you can choose yourself. Then now when I fill the details, I get an option like this, confirm. When I click on confirm, it will now this year, whenever anybody is trying to file information, they are getting this window, the amount of overpay to pay according PIT for 2028. And many people have put wrong information here, and it is locking their account. If your account is getting locked, no need to worry. It will take 24 hours. It will unlock automatically. However, here the information you need to put exactly same as previous year ITR. So if you have submitted joint tax declaration, in that case, just go to the previous PIT, copy the amount. For example, let's say if it was minus 7,000 or 4,000 or 5,000 or 2,000 or 700, whatever it is, just put as it is. If it's 7,580 or something, or if 6,666, put exactly the same value here. Then it will not lock the account. And when you click on confirm, you should see a summary, and it will ask you again to put your spouse details. When you put spouse details and this amount, then click on confirm, you should see a window like this, and the tax relief for joint together with spouse will be applied here. Now this window is very important. Once you add spouse details and last overpayment, you should see below screen. Here you can see clearly I have child relief automatically applied for my second child, for my first child. And then uh, here it will show you spouse income if you have filled anything. If you have not filled, if you have filled zero, then it will show you zero. And then here you will have bank account details, your address, all the details. Just verify if everything is correct, because if your bank details are not correct, then you should not be surprised when you see the officer at your home, or maybe Polska officer at your home with the cash to give you the income tax return, which happened with last year with a lot of people in our community. So you should not be surprised if you see the income tax return in the form of cash. And now, so always verify this bank information, because if it is correct, then you will receive this amount in your bank account. Now let's start this. So here I have declared the child benefit. So this information is not something I have filled manually. You can see here, this is my second child details, and it shows 2 months because it's 2 month born, and automatically they had the parcel number and everything. All I had to do is just confirm below, and when I click confirm below, it applied. So in many of you, because my income is not that big, but maybe in some of you will have very good income, so you will not see any significant difference. So it's totally your call whether you want to do it or whether you don't want to do it. It's totally your call. Now comes the other reliefs. So there are a lot of other reliefs also. In my case, most of the reliefs were not applicable, but one is youth relief for children, for youth below 26 years of age. They have additional benefit of around 85,000, which they can claim here. If their employer has not given the exemption, they can claim from here. 90% employer itself gives the exemption if the youth is below 26 years of age on the income tax for up to 85,000. And then this is internet relief. This is very complicated and confusing. In last few days I had a lot of discussion and debate with few people, and then I got to know, okay, let's do some focus on this, and then we'll cover this topic in further slides. So as I explained, if you have second child, add details, and it will reflect there are these are the some other reliefs, but of course I think most of us do not fall in this category. So
not beneficial. And now, internet relief. So you can put here internet relief. 760 zloty is the maximum limit. In my case, it was only 612 this financial year, so I put this only. And if you would like to donate some part of your tax, not income, so it will not reduce anything from your income or anything from your income tax return. While it will just reduce some amount, around 1.5% of your income tax amount, which will be donated to some of the charitable organizations which you think you want to donate. And you can check description of the video, because in video I have shared one of my friends charitable institutions details, because his mother is going through some treatment. So last year a lot of people helped and donated, and it really helped him a lot. So this year also I expect that if you would like, you can choose this donation details given in the description, so that it might help someone in need. So it's totally your call again. Now let me explain you internet tax relief to avoid any confusion. So basically, you can claim the income tax relief for a maximum of 2 consecutive years. And that means this year, if you have claimed, you have to claim next year also. If you don't claim next year, then after that next year, you will not be eligible. That is first thing. So this is a little confusing. Let's understand with the help of example. So it has 2 years of age limit in a row. This means you can either claim the deduction or for 2 consecutive years. Example, in 2023 and 2024 consistently you have claimed internet tax relief of 760 zloty, or maybe according to your bill of internet. Then in 2025 you cannot claim, you have to take 1 year gap. And then after you can claim again for 2 years like this. And there's another example in which if you have, let's say in 2017 you have claimed the income tax relief, and in 2018 you forgot to do that. In that case, in 2019 you cannot claim that. So it's 2 consecutive years, we have to be very careful and aware. So I claimed this last year, so I think this year also I'll be claiming this income tax relief. And now these are the some of the additional relief. I will not comment on this because I am not eligible to comment on this because I have not claimed it. But yes, this year, if you recall from my video of ppk, if you have not, please refer to my video of ppk, and there I was talking about ikzd accounts. If you have that, you can claim additional tax relief, and check the ikzd details on Podatki. You have all the details like how much tax relief you can get. That is one thing. And second thing, a lot of people have purchased their houses, and uh, this is debatable because I don't have purchased house, so I cannot comment on that. But my understanding is, if you have some expenses on the houses last year, for example on renovation or some changes you have done in the house or construction, then also you can claim by selecting this option, house expensing expenses not deducted in previous year. So this kind of thing. But again, do proper research, check Podatki portal if you are eligible for this, because this can definitely help you save some money. So primarily, now this is the summary of whole video. And for donation, I've already explained, you can enter details from the description. And like this, these are the various organizations which are eligible for the donation details. And now, once you're satisfied with all the information, then you can click on accept and send. And once you do this, you should see a window like this. Congratulations, you have submitted your tax form for EPIT 37 for 2023. And after that, you have this option where you click on um, document submitted. So now when you click on document submitted, after that, you should see something like this window as shown in the next slide. Here in 2023, you can previous year UPO also you can download. And if you remember my video on public transportation is Poland, and if you have not seen it, please go ahead and see this, because in first part of income tax I have promised that I will also tell you in the next video on how to apply the monthly discounted pass based on this income tax return or UPA form. So that UPA form you can below clicked on it 2023 and then preview and then preview UPA, and then you can click here and you can download. And once you download that, you can use that, and you can submit all the documents along with the your details. On refer to my video on how to apply monthly pass in Poland for transportation, and attach this UPO along with that, and I think you should be able to recharge your monthly pass for zone 1 in 80 zloty for all the trams and buses, and more for other zones as well. So I think this is very good information, and I feel that this video is complete. Now
In the end of the video, I am just going to cover what are the some of the common questions which were asked in lot of by lot of group members. So let's start with question number one. They were asking if your spouse income is not too high. So yeah, this was about the filing joint declaration, because some people are saying, is it good to file as a single individual taxpayer, or is it good to file as a joint taxation owner? So answer is, as I have already explained earlier, that if you feel sometime spouse income is very less, so combining definitely saves your some amount of tax, but sometime when it is high, so it totally depends on your income situation, and it's totally your call what you want to choose. It's good if you compare both the situation and then decide. So I leave it to you. Of course, I am not eligible for this. As per DTI treaty, Poland tax residents must pay income as per taxation law on global income. Yeah, I had a lot of debates in the morning, but then I also did some research, and it is true uh, that to avoid double taxation between India and Poland, yes, there is a treaty, and for that purpose, it is very necessary to declare income of Poland. But let's say if you have income from the sources from India, for example, you have a bank account and you get interest on that, and on that automatically tax get deducted. Same way here, if we have FD, the bank deducts the tax on that and send us the tax certificate. So obviously manually you don't have to do it. Even in PIT 37, we have no options to choose or do anything. But yes, if you have income, for example sales or any property sales or rental income from India, and if you have already paid tax there from the resources income generated from the resources from India, but as per Polish tax resident law, you have to see, and if there is a difference amount which you have paid there, remaining amount you have to pay here. But again, very less people in my community fall in this category, because most of us earn here and most of us invest here. So that's why we don't fall in this category. But yes, it might be used for some people who are who fall in this category. Now, income generate. So I think I have already explained this to avoid double taxation. And yes, if you have already paid tax in India, or income, if you have income in Poland, and you don't need to pay tax in India because you have already paid tax here. So that is the way of avoiding the double taxation. And last and most important question since morning I have been receiving in today, which is like this. If you see, most of the people who are trying to file the joint declaration on taxation with their spouse, they are getting error because they don't have surname in the spouse name. Now solution to this from last year and this year is very simple. When you don't have surname, then a word called this Brak Danish or Brak Nasviska. You can try any of these words either in capital letters or small letters or whatever letters you like, and try that. Sometime there is a dash, sometime your first name is repeated in the last name in small and capital, but when you do this three times it locks account. You have to wait for unlock again. And now what is important is, if you are not sure what to do, in that case primary the earner have a Zeus account. When you log into zeus.pl with your trusted profile, there you can go to the health section. I will show you here. So a lot of people ask me this question, so I had to take the screenshot. So when you log into zeus.pl, you have health insurance data. In health insurance data, you will have details of first name and last name of all the family names. So you should make sure you put the same thing exactly in same character, like capital or small or whatever letter it is. Just put it there, and I think it should solve your purpose. If still it is not solving your purpose, then it's a good idea to raise a ticket from Podatki portal, and then probably they should be able to solve your problem. So now in the last, a lot of people asked me to make a dedicated video on Zap3. So here I have covered this part also. So when you log into Podatki portal, you have this document. When you click on document, you click on submit document. And when you scroll down, you should see a form like this, Zap3 notifications. So you can fill in all the details here. And I think this should answer. It has very basic information, which I think everybody should be able to fill. So I hope this solves your problem about Zap3 as requested by someone. So congratulations for submitting your income tax return or PIT 37. If you think this video has helped you save money, please like, subscribe and share with your friends in need. Smile now because you are able to get the income tax return. I think generally 45 days is the time, but from previous experience, we have received mostly 15-20 days. In 15-20 days, we have received income tax last year, return last year. So I hope you should also get the same. So this is an initiative by Thakurs in Europe. It's all self-services for expats in Poland. And if you have any question, feedback, comment,
please put in the comment box. I'm happy for the feedback, because this video also I have made based on the feedback from the people and requests from people since morning. And somebody suggested, "Well, why don't you start a webinar or kind of live YouTube, so that we can also ask our questions?" So this video, when I will make live, it will have a live chat option also, where you can ask all your questions. So from here you can drop down, because I'm going to start and continue this video in Hindi for the viewers who doesn't understand English. So thank you so much for watching, and you have a good day. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल थाकोस इन यूरोप, एंड दिस इज द पार्ट 2 of income tax return. Part 1 is still valid because that is more descriptive video of our income tax topic. However, this video is more focused about the problems that we are facing commonly and the questions that I have been asked in the group. So I decided to make this वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश। एंड अभी ये वीडियो यहाँ से हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, आदत हो गई है स्विच करने की इंग्लिश पे, तो पता नहीं चलता कब हिंदी हो रहा है कब इंग्लिश। तो विंडो जो है स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से, और 30 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट है। डेट ऊपर नीचे हो तो मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना, क्योंकि ये हो सकती ये कभी भी चेंज होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमेशा पोडैट की वेबसाइट को सही इन्फॉर्मेशन के लिए रेफर करें। दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट कि मैं आपको सिंपल भाषा में इस चीज को समझा सकूं और आपकी प्रॉब्लम्स का आंसर कर सकूं। ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वहां पर वो PIT Podatki.gov.pl से ही रेफर्ड है। चलिए एक दूसरे को हेल्प करके दुनिया को और खूबसूरत बनाएं और एक दूसरे की लाइफ को थोड़ा इजी करते हैं, यही मकसद है इस वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ। PIT 11 जो है, जैसे अपना इंडिया में फॉर्म 16 होता है, तो उसी की तरह से यहाँ पर PIT 11 होता है। PIT 36 भी होता है PIT 37 की तरह ही इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन वो हम तब फाइल करते हैं जब आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पोलैंड के बाहर से हो, तो हमारे केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। और PIT 37 जो है वो हम सबके लिए मोस्टली एप्लीकेबल है, चाहे वो आप अर्निंग हो या नॉन अर्निंग हो, ज्वाइंट कर रहे हो या सिंगल कर रहे हो। प्रीवियस वीडियो का रेफर करें ज़्यादा डिटेल्स के लिए। तो podatki.gov.pl पे आप जाएंगे तो ये वाला लिंक आएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका इसका लिंक दे दिया है। ठीक है। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आजकल नया ऑप्शन आ गया, पिछली बार सिर्फ ये वाला ऑप्शन था, इस बार ये भी है। ये वाले पे करते हैं तो आपको पिछले साल का इनकम और करंट का जो रेवेन्यू है वो डालना पड़ता है, पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सीधा इस पे क्लिक करेंगे login.gov.pl पे, तो ये सीधा आपको उस विंडो पे ले जाएगा जहां पर आपको ऑटोमेटिकली डेटा फील्ड आएगा। अगर आप पहली बार डेटा फिल कर रहे हैं, पहली बार आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको ई मैक्रो टैक्स अकाउंट नंबर का ऑप्शन आएगा जनरेट करने का, वो जनरेट कीजिए। और उसके बाद ZAP 3 का ऑप्शन आता है, आप ZAP 3 को फिल कीजिए सारी डिटेल्स, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कीजिए, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह एड्रेस सब कुछ फिल होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। उससे क्या है, आपका इनकम टैक्स का प्रोसेस होने में बहुत ही ईजी रहेगा। और फिर उसके बाद आपका जब सब हो जाए, अगर ZAP 3 आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे जाइए, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में जाइए, उसमें ड्रॉप डाउन करेंगे तो ZAP 3 का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से भी आप फिल कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर आप उसके बाद आप योर EPIT पे जाइए, और अगर आप सेकंड टाइम ये फिल कर रहे हैं, लास्ट ईयर आपने किया है, तो ऐसा ऑप्शन आएगा जैसे मुझे आ रहा है। तो इस पे करते आएगा फाइल PIT का ऑप्शन, जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या योर EPIT कर सकते हैं। जब आप इस पे करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिटेल्स जो है सारी फिल्ड आएंगी ऐसे। अब इसमें क्या है, पहले आपका इनकम होगा, उसके बाद चाइल्ड रिलीफ होगा, उसके बाद टैक्स होगा, एड्रेस होगा, उसके बाद टैक्स ऑफिस होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगा। अगर आपको यहाँ बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, तो आप उसको जरूर फिल कीजिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपके घर पे कैश लेके आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर या पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिसर है, वो कैश लेके आएगा। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस हियर। ठीक है। और यहाँ लाल आ रहा है सब कुछ लिखा हुआ, तो इसका मतलब है आपको देने हैं पैसे, ग्रीन आ रहा है तो मतलब आपको मिलेंगे। तो ये दो चीजें समझ लीजिए बस। चाइल्ड टैक्स रिलीफ को लेके बड़ा सारा कंफ्यूजन है, तो इसमें मैं सीधा सीधा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बताता हूँ। देखिए, 1 20 तक तो आपका चाइल्ड रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं। 1 20 से ऊपर इनकम है तो उस केस में नहीं कर सकते, ऐसा इनकम टैक्स का पोर्टल बोलता है। लेकिन अगर 1 20 से ऊपर है और आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, तो आप टुगेदर विद स्पाउस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि 120 नहीं 240 तक एग्जाम हो जाता है, तब भी क्लेम कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद भी कई लोग पूछेंगे, तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर डाउट लग रहा है तो भी आप यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। और उसके बाद अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखाएगा, आपका चाइल्ड रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एलिजिबल होंगे तभी यहाँ पर वो चाइल्ड रिलीफ एप्लीकेबल आएगा, डिस्काउंट आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। स्टिल इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू डू इट और यू डोंट वांट टू डू इट। मैंने किया है बिकॉज मुझे लगा कि वर्थ है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अमाउंट में। जैसे 2 मंथ्स के बच्चे का मेरा 92 दिखा रहा था अपने आप ही। मैंने वो डिटेल्स भी नहीं भरा है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ 2 महीने पहले सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपके केस में अगर नहीं दिखा रहा, आप मैनुअल फिल कर सकते हैं। अगर आप हाई इनकम थ्रेशोल्ड में, तो शायद आपको कोई चेंज ना दिखे, लेकिन अगर लो इनकम थ्रेशोल्ड में है तो कुछ थोड़े से पैसे आपके बच जाएँगे। तो मेन तो यही रिलीफ है। उसके बाद अपना इंटरनेट रिलीफ होता है 760 ज़लोटी का। वो मैं अब आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं टुगेदर विद स्पाउस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे स्पाउस का पेसल नंबर और डेट ऑफ पेसल नंबर डालूंगा तो डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएगा। रेवेन्यू लास्ट ईयर अगर कुछ था तो डालिए, वरना जीरो डाल दीजिए। और 2023 में लेट्स से उन्होंने जॉब स्टार्ट किया, तो जो भी है वो डालिए, वरना यहाँ भी जीरो कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर जॉइंट में कर रहे हैं तो। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा कंफर्म का ऑप्शन आएगा। कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू डालनी है जो लास्ट ईयर आपको आईटीआर में मिली या आपने पे करी। अगर आपने पे करी तो वो माइनस प्लस में होगा, और अगर आपको मिली तो माइनस में होगा। पर जो भी होगा वो अमाउंट आप एग्जैक्टली भरिए। अगर आपको नहीं पता है अमाउंट, तो आप जाइए पिछले ईपीआईटी पे, वहां से कॉपी करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल कीजिए। जैसे ही आप फिल करेंगे वो आपसे स्पाउस का नाम एंड सरनेम मांगेगा। एज सुन एज यू डू इट, आपको फिर से ऐसा विंडो आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो डिस्काउंट है टुगेदर विद स्पाउस वाला, वो यहाँ अप्लाई आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लीजिए, चाइल्ड रिलीफ वगैरह, ठीक है। यहाँ स्पाउस का इनकम वेरीफाई कर लीजिए जीरो है कि नहीं है, और यहाँ पर आप देख लीजिए बैंक अकाउंट है कि नहीं। जब सब कुछ आपको लगे और आप सेटिस्फाइड हैं, तो उसके बाद, और यहाँ ऐसे चाइल्ड डिटेल्स अगर आपने भरी है तो वो ऐसे आपको दिखाएगा। मेरे केस में बाय डिफॉल्ट आ रहा था, ठीक है। तो ये करने के बाद, और ये तरह तरह के और रिफंड मतलब रिलीफ्स हैं, बट हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है ज्यादातर लोगों में, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेट रिलीफ, जो आप 760 ज़लोटी का मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। ये मैंने वेरीफाई किया है पोडैटकी से, तो ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर से पढ़ लीजिए इसके बारे में। मैंने ये एग्जांपल्स भी दिए हैं समझाने के लिए कि आप मैक्सिमम 760 कर सकते हैं। जितना भी बिल आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, और वो आप सबमिट कीजिए जितना भी आप क्लेम कर रहे हैं। अगर आपने 2023 में किया है तो आप 2024 में भी क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 1 साल का गैप लेना होता है। और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए इस साल आपने लिया है, लास्ट ईयर लिया है, और इस साल आपने रिलीफ नहीं लिया, आप भूल गए, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल और। तो इसीलिए इंश्योर कीजिए, अगर आपने लास्ट ईयर ये बेनिफिट लिया है, तो इस साल कीजिए, और इस साल आपका फर्स्ट आईटीआर रिटर्न है तो इस साल कीजिए, और अगले साल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको क्लेम करें, ठीक है। और उसके बाद देखिए हाउस रिलीफ जो है उसके लिए मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ हाउस परचेज्ड हियर। बट एज फार एज आई नो, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने लास्ट ईयर कोई हाउस में रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कोई एक्सपेंस किए हैं और क्लेम नहीं किया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर भी इस पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने इसको क्लेम नहीं किया है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने इसको आई एम नॉट एलिजिबल टू कमेंट ऑन दिस। बट स्टिल जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, वो ये कहता है कि अगर हाउस पे कोई एक्सपेंस हुआ है आपका, तो आप उसको भी यहाँ क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन भी किया है कि क्या क्या और बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। एक तो देखिए, आपका अगर IKZE अकाउंट है, क्योंकि पीके वाला वीडियो है ना, पीपीके वाला, उसको आप प्रेफर करेंगे तो उसमें IKZE की बात हो रही थी। अगर आपने IKZE किया है क्लेम, तो उसमें, या आपका ये अकाउंट है, तो आप उसकी बेस पे भी इसको टैक्स एग्जेम्पशन में काउंट कर सकते हैं। और जो एक और टैक्स एग्जेम्पशन हो सकता है वो है हाउसिंग एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर फॉर रिनोवेशन और अदर, ठीक है। तो ये एक्सपेंस हुआ है और आपने पिछले साल क्लेम नहीं किया, उसका भी आप एक्सपेंस यहाँ पर रिलीफ ले सकते हैं टैक्स रिलीफ में। तो प्राइमरीली हमारे लिए इतने ही टैक्स रिलीफ्स होते हैं एज अ फॉरेनर, एंड आई थिंक इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। एंड डोनेशंस अगर आपका है तो आपके इनकम नहीं, जो आपका टैक्स सपोज लेट्स से 7,000 8,000 टैक्स बन रहा है, तो उसका 1.5% आपका ये चैरिटी में चला जाएगा, अगर आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या मेंशन करते हैं तो। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाएगा जो जिसका भी आप यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे। और अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो एक्सेप्ट एंड सेंड कीजिए, और ऐसा आपको लास्ट में मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का, एंड इट मीन्स कि आपका इनकम टैक्स सक्सेसफुली हो गया। लास्ट वैसे तो 40-45 डेज का टाइम होता है, लेकिन लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है ज्यादातर लोगों का 20 डेज 15 डेज में ऐसे आ गया था। तो उसको मैं कमेंट नहीं कर सकता, इट्स ऑल अप टू देम। बट हाँ, आ जाता है जल्दी, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट टाइम को बताया था, इस बेस पे जो आपका यूपीए फॉर्म डेवलप होता है, जैसे बोलते हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन रिसिप्ट, उसके बेसिस पे आप यहाँ मंथली डिस्काउंटेड पास ले सकते हैं। जैसे जोन 1 का क्रैको में 80 ज़लोटी के आसपास लगता है, जोन 1 2 3 का भी कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट होता है, तो आप उसको बनवा सकते हैं। उसके लिए मेरा हाउ टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन पोलैंड या हाउ टू अप्लाई मंथली पास इन पोलैंड वाला वीडियो देखिए। उसमें सारा डिटेल्स मैंने दिया हुआ है, आपको कैसे करना है। ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत नॉलेज देने की कोशिश की है, और चीज़ों को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऐसा विंडो आता है आपको। इसमें लास्ट ईयर के भी यूपीएस आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ प्रीव्यू पे जाके जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे यूपीए फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
अब इसके बाद ये एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं ग्रुप में पूछते रहते हैं कि मेरा जो एफडी है, एफडी का रिटर्न जो आया है क्या उसे डिक्लेयर करने की जरूरत है। जनरली एफडी पे आपका जो इनकम टैक्स है ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, आपको रिसिप्ट मिलता है। इंडिया में भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपको आ ही जाता है जो भी बैंक डिडक्ट करके टैक्स काटता है। दूसरा चीज ये है कि डबल टैक्सेशन नहीं, अगर आपका इनकम पोलैंड में है तो आपको इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है इस इनकम पे, भले आप यहाँ से पैसे वहां भेज रहे हैं यूजिंग एनआरओ अकाउंट। और जो एनआरओ एनआरई अकाउंट वाला वीडियो है उसको देखिए, उस पर आपको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा ग्लोबल इनकम जो होती है पोलैंड में डेफिनेटली उस पर टैक्स होता है, लेकिन जैसे ग्लोबल इनकम आपकी किसी भी कंट्री की है, उस कंट्री में आपने टैक्स दे दिया है, तो उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट है एज पर पॉलिश टैक्स लॉ वही अमाउंट यहाँ पर पे करना होता है। मोस्ट ऑफ अस जो एज एनआरआई हम लोग क्योंकि यहीं पे अर्न करते हैं, यहीं पे स्पेंड करते हैं, तो हमारा ये केस नहीं है। बट कुछ लोग हैं जिनका रेंटल या सेल्स या कुछ और इनकम सोर्सेस है इंडिया में, तो डेफिनेटली उनके लिए शायद ये यूजफुल हो। दिस इज एज पर द ट्रीटी। एंड देन उसके अलावा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बहुत सारे लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनका स्पाउस डिटेल डालने के बाद अकाउंट लॉक हो जाता है 3 बार इंफॉर्मेशन डालने के बाद। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप zoos.pl पे जाइए और उसमें जाके आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस डेटा है, ऐसे मैंने डाला है। हेल्थ इंश्योरेंस डेटा में देखिए कि आपके स्पाउस की डिटेल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, और जो यहाँ दिखा रहा है आप उसी को डालिए। उसको डालेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है या तो ब्रैक डेनिस डला हुआ है या ब्रैक नाज विस्का डला है, स्पेलिंग चेक कीजिए और साथ में कैपिटल स्मॉल देखिए, आपका ये हो जाना चाहिए सॉल्व। क्योंकि 90% लोगों का जो ट्रबल शूटिंग लास्ट ईयर किया वैसे ही सॉल्व हुआ है। एंड देन कई लोग मुझे बोलते हैं जैप 3 पे डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, तो देखिए ये हो गया डेडिकेटेड वीडियो। आप बस पे लॉग इन करके सबमिट डॉक्यूमेंट में जाइए और वहाँ जैप 3 आ जाएगा, इस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, हो गया आपका डेडिकेटेड वीडियो जैप 3 पे। बहुत चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ईजी है और क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। Please like, share and subscribe with your friends and relatives or someone in need। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज एक लाइक बटन दबाइए और नीचे कमेंट जरूर लिखिए भाई इतने पैसे बचे हैं तो कुछ। और आई एम श्योर आपको अच्छा आईटीआर होगा, मुझे तो अच्छा आईटीआर आ रहा है इस बार भी। लास्ट ईयर और इस ईयर में सिर्फ 600 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। आई होप आपको भी अच्छा आईटीआर का अमाउंट आ रहा होगा। तो पार्टी कीजिए और मन करे तो बता देना, मैं भी आ जाऊंगा पार्टी के लिए। एंड नीचे आप कमेंट डाल के एटलीस्ट कुछ तो लिख ही सकते हैं ना, तो कीजिए, आपके लिए फ्री है और इट विल मोटिवेट मी टू मेक वीडियोस लाइक दिस। बिकॉज नेक्स्ट वीडियो आई एम मेकिंग ऑन पेरेंट्स वीजा अपॉइंटमेंट सिस्टम एंड पेरेंट्स वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस डीआरसी इन नेशनल अदर कैटेगरी एंड शेंगेन अदर एंड टूरिस्ट कैटेगरी। जो मैंने छोड़ दिया था टॉपिक अभी तक, मुझे लगा था उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पोलैंड वीजा स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो अब तक एप्लीकेबल था। लेकिन चलिए काफी सारे चेंजेस हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी बना दूं, और वो शायद इसी वीक में मैं रिलीज करूंगा। एंड मेडिकल पार्ट 2 जो है वो मेरा जल्दी ही आने वाला है। तो प्लीज स्टे इन टच, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आपके पास कोई भी कमेंट हो, फीडबैक्स हो, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। एंड this will definitely help us to motivate making more videos like this, and it will simplify the journey of all the expats in Poland. And let's enjoy together, and let's support each other to make the world more beautiful. Thank you so much for watching, and you have a good day. Do widzenia and Jai Hind.